reason we have assembled here today. Further, welcome to all our clients, caregivers, volunteers, staff members, friends, donors, well-wishers, whose presence makes today's celebrations especially memorable. The Manav Foundation is an organization that works in the field of adult mental health and is involved in research, training, outreach and awareness, networking and publicity, advocacy, and last but definitely not the least, service provision under its umbrella. As a registered charitable trust, the Manav Foundation has been through several ups and downs. And despite plenty of uncertainty, the Manav Foundation has been steadfast in its dedication. Rain or shine, empty coffers and pandemics, we have weathered them all, relentless in our support and servitude. Today, we celebrate our new rehabilitation center. Today, we have a milestone that has been 20 years in making, and at this juncture, it is just as important to celebrate the journey as it is celebrate to the achievement. A journey that in commitment has become the driving force behind our organization's progress. Ensuring seamless and uninterrupted daily operations is a remarkable Mana Foundation team. I'm requesting Mana Foundation team to be here around the dais. This exceptional team comprises our psychiatric social workers. So here we have Ms. Vinny Mishra, me, myself, Bhagyashree, our client assistant, Harsha Dubare, our administrator, Vijay Londe, and the invaluable center staff, that is Usha, Shobha, and Vinod Kamble. Together, they form the powerhouse that tackles our mission with a passion and efficacy with Ryan Zaveri, Amanullah Sheikh, and Vijay Bahadur, all contributing to our efforts of resource generation, adding the crucial element of the sustainability. It is vital to acknowledge that every effort put in by this dynamic team is the statement. This journey started for me with a phone call early on in 2004 from a lady who lived in Churchgate and had this idea of starting a rehabilitation center for adults who live with mental illness. She invited me to help her with the specifics of her idea together and into place, given that I had some prior experience with another similar rehabilitation center in the past. I excitedly agreed to meet her, and we casually met, sitting in her bedroom, jotting down furious little notes and points on scraps of paper. And the rest, as they say, is history. Without her passion, her dedication, and her perseverance, Manav Foundation would not have been. Mrs. Meena Mutta. Schizophrenia, paranoid schizophrenia. I was shaken up, but there was a long list of things, a long list of temperament, ups and downs. Manav's story was always like a same with me, like me, Manav and me, always been an ups and downs. But Here, which not only won hearts but also earned her the prestigious Filmfare Award for Best Female Debut. Beyond her on-screen achievements, Bhagyashree has also been an advocate for mental health awareness. Her presence on this panel at the Mental Health Summit is a testament to her commitment to creating positive impact in society. She understands the importance of addressing mental health issues and using her platform to spread awareness and destigmatize the conversation around it. So with open minds and open hearts, can we please welcome Bhagyashree to share her wisdom and contribute to this vital discussion. Good evening, everyone. Happy New Year. Happy New Year to each and every one of you, and a great beginning to Manav.
Minujiri, thank you for having me here. I think after hearing stories of Fatima, Roshan, and Aparna, I think we need to give them a big, big round of applause for making an opportunity out of an obstacle which otherwise would have marred their life and their careers. So to be able to move forward in life, I think is the greatest journey of all, and all of them have mastered the art. So kudos to all of them. I am so happy to be standing here, to be associated with Manav right now. It has been working tirelessly for the last 20 years, and finally they have got a home. So congratulations. I think when we talk about mental health, people always talk about the worst given situation. Like Aparna said, लोग पागल कहते हैं, लोग डरते हैं कि क्या हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएं? Should we go to a doctor? It will kind of create a stigma amongst our family, friends, people that we care and love about. Probably they'll look down upon us. But you know what's strange? In the world that we are living in today, it's not the worst given situation, but small situations which really require help from the society, from people around us, from our friends and family. And Manav gives that opportunity. It gives that opportunity for people who are probably living on their own. There have been a lot of nuclear families. There have been families which probably have come into this big city of Mumbai without having people around them all the time. Probably they have to work hard for their living and they have no other people to take care of their elders, probably their children, many times their sibling or even their spouse. You know, mental health is not always about bipolar disorder or about schizophrenia or even just getting Alzheimer's. Mental health can be as small as having anxiety, depression, having probably menopause causes mental anxiety. Probably having your children leave the nest and the empty nest syndrome can cause anxiety and depression, and that can be just a beginning to so many other problems. So many other problems that makes it difficult for us to live in society, to interact with our family, friends, to basically do our daily chores. You'll probably want you to just stay in bed and not get up and face the morning. You'd probably not want to see the daylight. You'd want to be stuffed up in your room. You don't want to meet anyone. You don't want to do anything. And that can be really bad. I think when we talk about bipolar disorder, we talk about schizophrenia, we talk about all these things, there are medications that can be done. You go to a doctor, you go to a psychiatrist, and they would probably be able to help you. But what happens when you come back home? What happens before you reach that stage? You need people around you to help you to understand what you're going through, and probably you don't know. मैं सोचती हूँ कि 20 साल पहले डिप्रेशन क्या था किसी को पता भी नहीं था. एक नई माँ अपने बच्चे को जन्म देती थी और for some time, for no reason at all, she would probably be crying and not understand why. बच्चा रोता था, माँ रोती थी. पता नहीं होता था कि क्यों रो रही है. There would probably be parents who send their children off to boarding, or maybe they leave their parents and go abroad. And the mother who has dedicated her entire life to taking care of that child suddenly feels her life is worthless. And she's of no importance to her society, to her family, to even herself, and she doesn't know what to do with her life, and she gets into depression. What do you do with that? Who do you talk to? किसी और से बात कर लो तो सब लोग बोलते हैं हम भी उस चीज से गुजरे हैं तो क्या.
लेकिन तो क्या is not the answer. That's when you need people to look after you, people to understand what you're going through, empathize with you, give you some kind of sympathy, give you a direction, give you a roadmap to walk on to get back into the society, to be able to deal with yourself, to move ahead in life and make something out of it. I think it's so important that so many of you, the clients of Manav are also here, a lot of caregivers here. It is so important to understand that being a caregiver can probably nip these diseases, these mental illnesses right in the bud. We will probably help the person get used to the society, to be able to make something out of their lives much earlier in life than actually facing the deepest and deepest of depression, or going into the thought of wanting to commit suicide, of going into the thought of being alone, being lonely, being invaluable to society. I think Manav and the caregivers will help each and every one of us, because believe me, we all go through some time or the other, we go through our lows, and we always hope and wish that we had a friend. We had some shoulder to cry on, someone who would understand us, to understand our feeling, not judge us, not tell us कि तुम जो सोच रहे हो वो बुरा है, तुम जो सोच रहे हो वो सही नहीं है, तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है. I think the most important thing is for people to just listen. We have lost the art of listening. We have just lost the art of understanding or trying to understand what the other one is feeling. And it's not necessary that all of us have to feel the same. Every person feels and understands emotions differently. And I'm so happy that Manav has got a lot of caregivers, a lot of people who are willing to give that listening ear that we all require. So kudos to Manav, and I hope that ये 20 साल तो यूं ही निकल गए, 20 साल और इनका चलना चाहिए. और not only 20 साल, I think Manav should make every Manav self-reliant. जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं, आत्मनिर्भर बनो. So thank you for Manav, and thank you. I wish Manav that makes all the individuals Atmanirbhar at the end of the day. So thank you for having me. Thank you, Bhagyashree, for your inspiring and kind words. Your empathetic and kind nature to the plight that many of us face, including the clients and caregivers, is truly inspiring. And I'm sure an icon as important as you will really give home a memorable message to everyone seated. This brings us to the end of today's event, except for the most important vote of thanks, to be offered by Manav Foundation trustee Pradeep. नहीं यहाँ रुको ना यहाँ रुकते हैं हम एक बार इधर थैंक यू आइए आइए इधर ही आइए मैम बाइट मैम यहाँ पे मैम मैं यहाँ बाइट करते हैं अरे रुक जाओ आएंगे यहाँ पे यहाँ बाइट करते हैं चल मैं एक मिनट आइए ना आप जाइए हाँ आन दो अभी अपन जो है सो फर्स्टली मैम आज जो बात हुई मोस्टली इट वाज अबाउट मेंटल हेल्थ देयर सो मेनी थिंग्स जो सीखने जैसी थी टेल अस समथिंग अबाउट व्हाट ब्रिंग्स यू हियर फर्स्टली I feel it's very important in today's times where we talk about mental health. It's not just about deeper mental illnesses, but also daily depression, anxiety, pressures that we face in society. मेरे ख्याल से जो जेन नेक्स्ट है उनमें इतना सारा प्रेशर है क्योंकि एक सेकेंड डू यू वांट मी टू स्पीक इन हिंदी और इन इट्स फाइन यू कैन गो इन बोथ द लैंग्वेज
जो जेन नेक्स्ट है, बहुत सारा वर्क प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है। पहले बड़ी फैमिलीज़ होती थी जहाँ पे मामा चाचा बुआ कोई ना कोई होता था कि भाई अगर माँ बाप के बीच और बच्चे के बीच में कुछ तंज हो जाए तो वो लोग संभाल लेते थे, अगर मियाँ बीवी के बीच में कुछ हो जाए तो बड़े संभाल लेते थे। अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई है, लोग अकेले रहना शुरू कर दिए हैं, वर्क प्रेशर्स है, कंपटीशन है, सोशल मीडिया है। इतने सारे प्रेशर्स होने के बाद डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों बढ़ चुकी है राइट। बेसिकली इन सोसाइटी। और हाल ही में एक फिल्म आई थी, खो गए हम कहाँ, दैट एक्चुअली टेल्स अबाउट चिल्ड्रन गोइंग थ्रू सो मच प्रेशर। तो मेरे ख्याल से मेंटल इलनेस या मेंटल एंग्जाइटी या डिप्रेशन, ये चीज़ सोसाइटी में बढ़ गई है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारे फैमिलीज़ के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ उस तरीके से व्यवहार करें जहाँ पर एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे की बात समझे, सुने। लाइक आई सेड इवन आउटसाइड दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिसन। सब लोग अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सुनना कोई भी नहीं चाहता। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये हुआ है कि हाउ आर यू तो सब पूछते हैं, हाउ आर यू के बाद नेक्स्ट सेंटेंस भी पूछ लेते हैं, हाउ आर यू का जवाब कोई नहीं सुनना चाहता। सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आई थिंक दैट विल रियली रियली हेल्प। मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह इस टाइम की बात करें तो सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा मतलब मेंटली हेल्थ के रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा उनकी रहती है, क्योंकि लोग स्टेटस दिखाना चाहते हैं। सो उसके रिलेटेड क्या कुछ कहना चाहेंगे यंग यूथ के? देखिए, बात यह है कि सोशल मीडिया इज़ अ टूल, एक मार्केटिंग टूल है, तो वो वहीं तक सीमित रहना चाहिए। जो हम जैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, टीवी पे कोई चीज़ दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे वैसे ही होता है। तो हम वहाँ तक ही रखें सीमित उसे, एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से, एंटरटेनमेंट के हिसाब से, मार्केटिंग के हिसाब से, तब तक तो ठीक है। बाकी अगर आप किसी चीज़ को देख के ईर्ष्या कर लो या ये सोचो कि उसके पास है और हमारे पास नहीं है, वो बात अगर आपको मन में, दिमाग में खाई जाती है तो फिर तो डिप्रेशन होने वाला है। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू बी सेटिस्फाइड। मैम, वन लास्ट क्वेश्चन। जी। हम कई बार देखते हैं कि जिसको काम नहीं मिल पाता ऑन द रेगुलर बेसिस, दे फेल्ट इनटू डिप्रेशन एंड एंड अप कमिटिंग सुसाइड, व्हाट आई हैव सीन। सो हैव यू एवर फेल इनटू द डिप्रेशन और समथिंग लाइक दैट? एंड अगर आपके मन में कुछ मैसेज है टू दोज पीपल हु आर गोइंग इनटू द डिप्रेशन फील्ड राइट नाउ, सो उनके लिए क्या कुछ कर रहे हो? सबसे अहम बात है कि अपनों से बात करो। और मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी जिनके घरों में बच्चे हैं या कोई इंसान उनको लगता है जो डिप्रेशन में जा रहा है, उनकी बातें सुनो, उनको ये एहसास दिलाओ कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए हैं और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ना जानते हुए सिर्फ सॉल्यूशंस उसको दे, जो सॉल्यूशन उसको लगता नहीं है, तो और मुश्किल हो सकती है। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेडिकल हेल्प ले ले, डॉक्टर्स के पास जाए। जैसे हमें सर्दी, ज़ुकाम, खांसी होती है, बुखार होता है, हम डॉक्टर्स के पास जाके उसकी दवाई लेते हैं। तो डिप्रेशन भी ऐसे ही है, लोग उन्हें पागल नहीं समझे, उनकी हेल्प करें। अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है या साइकियाट्रिस्ट है, उनके पास जाकर अपना दिल का बोझ हल्का कर ले, अपने मन की बात कर ले, तो शायद ये सल्यूशन उन्हें मिल सकता है कि अपनी लाइफ कैसे सुधारें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम इस चीज़ की अवेयरनेस खुद में रखें कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं या हमें किस चीज़ की हमें बुरा लग रहा है, तो उस चीज़ से दूरी रखें। जैसे इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से हम दूर जाए, नेचर में जाए, हम फ्रेश एयर लें, खुली सांस लें। देखिए, हम बम्बई जैसे शहर में रहते हैं, वहाँ इतनी सारी पोल्यूशन होती है, इतना सारा टेंशन होता है, आवाज़ होती है, हम अपने आप के साथ ही नहीं रह सकते। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम
दिन में कुछ वक्त, जैसे बोलते हैं मेडिटेशन करो, या अपने आप क्या चाहते हो वो समझो, उस रास्ते पे चलने का प्रयास करो। जो हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारे सपने हैं, उनको तिजोरी में कभी बंद नहीं करना चाहिए। उसकी ओर दौड़ना चाहिए, चलना चाहिए या रेंगना चाहिए, लेकिन चलना ज़रूर चाहिए, क्योंकि वो सपने ही हैं जो हमें होप दिलाते हैं, हमें खुश रखते हैं, और उन्हें हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।